बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि तमाम नाज़रीन खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखेंगे किस तरह से जो है वो किसी कंपनी के अंदर जो किस किस किस्म की जो है वो फ्लोटिंग कास्ट होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो मतलब कि जो पहले से ही एक शेयर होल्डर है कंपनी का, उसको किस तरह से जो है वो कंपनी दोबारा जो है वो शेयर इशू कर सकती है। ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की अपडेट्स जल्द से जल्द आप तक पहुंचती रहे। तो चलें जी, व्हाट इज़ फ्लोटिंग कास्ट। तो फ्लोटिंग कास्ट होती हैं द इशू ऑफ शेयर्स और बॉन्ड्स पार्टिकुलरली to general public is a very complicated and technical affair. It requires the input of a large number of professionals like lawyers to draft the various legal documents involved in the issue, charter accountants to assist the company in getting approval for issuance of shares from SECP and relevant stock exchange. उसके बाद brokers to assist in processing of the shares application received from the public financial institutions to extend underwriting guarantees commercial banks to actually receive the share application and money. All the professional persons have to be paid for their services. In addition, expenses relevant to printing of a large number of shares applications, form, prospectus, booklets, placing advertisements in newspapers वगैरह वगैरह must also be borne by the company. All these expenses are called floating cost। ठीक है, तो शेयर इशू करने के ऊपर जो भी खर्चा आता है कंपनी को, उसके लिए लॉयर हायर करने पड़ते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ जो है वो अप्रूवल लेना पड़ता है SECP से। ठीक है, उसके अलावा जो है वो प्रिंटिंग एक्सपेंसेस सब कुछ जो है ना वो फ्लोटिंग कास्ट के अंदर आता है। ठीक है, generally but not always floating costs are capitalized. These are carried in the company's balance sheet as intangible assets and gradually amortized over a reasonable period. One impact of floating cost is that they reduce the amount of capital that is actually received by the company upon issue of shares or debentures. In turn, this has the impact of increasing the effective cost of capital. This point ठीक है, तो ये हो गया जी फ्लोटिंग कास्ट। ठीक है, फ्लोटिंग कास्ट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, उम्मीद है समझ आ गई होगी। उसके बाद जो है वो आज इशू ऑफ न्यू शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ठीक है, तो पहले से जो शेयर होल्डर है उसको न्यू शेयर किस तरह से आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो है ना दिस में टेक फॉर द फॉर्म ऑफ राइट इशू और अ बोनस इशू। ठीक है, तो ये दो फॉर्म में हो सकता है, या तो राइट इशू की सूरत में या फिर बोनस इशू की। तो जो राइट इशू है वो देख लेते हैं हम। दिस रेफर्स टू इशू ऑफ फ्रेश शेयर्स टू अ कंपनीज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स विद द व्यू ऑफ राइजिंग additional capital. If a company that has profitable operated for some years now wishes to expand its operations and for this purpose decide to raise more capital by selling new shares, it is likely to command a fair premium on its share price. By restricting the new shares only to existing shareholders, a company ensured that the voting right and wealth of the existing shareholders are not impaired। ठीक है, तो ये राइट इशू के हो गया। ठीक है, ये देखिए नीचे, when a company makes a rights issue it offers a right to existing shareholders to buy shares out of the new issue in proportion to their existing holding. The shareholders are free to exercise the right themselves or to sell the
right to someone else if they do not wish to buy the shares from the new issuing themselves, ठीक है। उसके बाद a common feature of the right issue is that these are generally made at a price less than the prevailing market price, ठीक है। तो ये हो गया राइट वैल्यू के ऊपर जो है ना, राइट के ऊपर जो इशूइंग होती है पहले वाले शेयर होल्डर्स को, वो इस तरह से होती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।